Namaste. We are from Delhi Public School, Miapur. This is Yash, Sneha, and I am Vedika. We are at CMR College, Hyderabad, Telangana. It is my pleasure to introduce you to our board game, Krida View, inspired by the war strategy Chakravyuh, designed by Dronacharya for the famous Battle of Kurukshetra in Mahabharata. It was an excellent military multi-tiled spiral formation. This innovative board game found its roots at our school during the multidisciplinary CBSE Art Integrated Learning Project under the aegis of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji's Ek Bharat Shresth Bharat initiative, where our state of study was Haryana last year. Thanks to the Government of India initiative Torticon 2021 for providing us the opportunity to take it to the next level. We proudly named this our Atmanirbhar initiative Krida View, a Make in India board game that combines the concepts of modern math and Vedic math for various age groups and specially for our visually challenged friends. We students realized that it was a wonderful opportunity to introduce the rich and robust traditions of our country, our Bharatiya culture. Our aim was to imbibe in students the love for Indian mythological characters and their prowess. Children today are fascinated by the Avengers of the West, but we feel that through this game we can change this mindset to let them know about brave Indian warriors like Abhimanyu who fought dauntlessly with dignity until the end. As we began ideation, we decided to integrate the mathematical concepts of exponents, multiples and factors, Vedic maths, and basic mathematical operations for 3 versions of Krida View. क्या शुभ नाम बेटा तुम्हारा? This is the prototype for Krida View 1. It is for age levels 12 years and above, and it has the maths concept of laws of exponents. This can be played by 2 to 5 players. There are various blocks like the normal blocks, the white blocks, the green blocks which have the multiplication of exponents, and there are the colorful blocks which are the Sena formation blocks like Senamukha, Patti, Kulma, etc. There are also red blocks that are the danger blocks known as the Vignasas. Also, the player is known as a winner if he teaches Mahayodha and also comes out. We also have another board version with a braille script for the visually impaired children. The braille scripts have a symbol L with them to represent the number series on the left bottom corner, whereas for the colorful blocks, the braille script is on the right to represent alphabets. We have also an app coded from PictoBlocks which helps the visually challenged children to ask questions and they get to know what to do on a certain block. If they land on a certain block, they can feel whether they are on the number block or the alphabet block and ask the app questions. These questions can be asked in both Hindi and English. We are also having version for lower grade students, Kridavyu 2 and Kridavyu 3. In Kridavyu 2, we have the concept of factors and multiples along with Vedic maths. So instead of the exponents block in Kridavyu 2, we have the Jnana cells. And instead of the Sena formation patterns, we have the Astra cells. If somebody lands on the Astra cell, he or she needs to perform a particular yogasana and follow the instruction given. We also have another version, Kridavyu 1, for age groups 5 to 8 years. मतलब कोई बड़ा व्यूह रचना करनी है तो मैं आपको भेजूंगा तो चलेगा ना? धन्यवाद सर। देखिए आपका गेम बड़ा इंटरेस्टिंग है और आपने ये छोटी सी उम्र में ये कोशिश किए हैं वो भी सराहनीय है, लेकिन मुझे जिज्ञासा हो रही है क्योंकि कहाँ महाभारत, कहाँ अभिमन्यु और कहाँ चक्रव्यूह और वहाँ से आप 21वीं सदी में क्रीडा व्यू में ले आए, ये विचार कहाँ से आया? हमें एक बोर्ड गेम बनाना था और बोर्ड गेम में हमें पहेली को इन्वॉल्व करना था, इसलिए हमें चक्रव्यूह याद आया। चक्र यानी सर्कल और व्यू यानी मेज, तो हमने इसी को इंटीग्रेट करके एक
चक्रव्यूह बनाया है। और क्योंकि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गए थे, पर हमें बच्चों में ये नहीं डालना है। हमें बच्चों को कहना है कि they should never give up. They should not have partial knowledge, as Abhimanyu entered the Chakravyuh without knowing how to come out. And it also spreads the essence of perseverance. That's why we have found a way to come out. The winner, the player who comes out is the Vijeta or the Mahayodha. अच्छा, कितने समय लगता है ये गेम पूरी होने में? औसतन कितना टाइम जाता है? 10 मिनट, क्योंकि हमने एक इजी वे रखा है जो कि महायोद्धा से बाहर आ जाएगा, तो ये 10 मिनट में हो जाएगा और बहुत आसानी से खेल सकते हैं लोग। अच्छा, खेलने के लिए जाएगा जो और जो चक्रव्यूह की कथा जानता है, वो ये तो नहीं सोचेगा कि मेरा हाल भी अभिमन्यु जैसा हो जाएगा और डर जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा ना? वो विजयी होकर के निकलेगा कि अभिमन्यु की तरफ फंस जाएगा? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसलिए हमने मतलब जो विजेता है, जो बच्चा खेल रहा है, उसे विजेता बनाने के लिए हमने बाहर जाने का भी रास्ता ढूंढा है। देखिए, मैं आपकी इस कल्पना शक्ति को और इस रचना के लिए अभिनंदन करता हूं क्योंकि अभिमन्यु ने बहुत छोटी सी उम्र में ही एक लीडरशिप क्वालिटी के दर्शन कराए थे और कईयों को उसने बिल्कुल मोटिवेट किया था। और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपके बोर्ड गेम में लीडरशिप स्किल, स्ट्रेटजी, क्रिटिकल थिंकिंग, इसके भी एलिमेंट मैक्सिमम हो, जिससे खिलाड़ियों में इन गुणों का विकास खेलते खेलते ही उनका मन काम करना शुरू करेगा, एक प्रकार से उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी। तो मैं समझता हूं ये गेम व्यक्तित्व के विकास का भी हिस्सा बन सकती है। खेल भी चलेगा, टीम स्पिरिट का भी एक अच्छा सा उदाहरण बन सकता है। तो मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, आपको बहुत बधाई है। धन्यवाद। धन्यवाद।